अफगानिस्तान में खौफ है, अफगानिस्तान में फ्यूचर नहीं है। हर आदमी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से बाहर निकले। टारगेटेड सर्च ऑफ द हाउसेस, फॉरेनर्स के साथ काम किया है, उसका नाम लिस्ट में है। क्रिमिनल एक्टिविटीज तो रिड्यूस हुआ है। काबुल इज लाइक अ गोस्ट सिटी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और मेरे कॉलीग महमूद सलीमी। महमूद प्रोफेसर हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं, खुद भी एक फिल्म मेकर हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म्स बनाई हैं, इस वक्त कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। महमूद सलीमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपसे भी शुक्रिया। तो महमूद, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और आज हम इकट्ठे हुए हैं ये बात करने के लिए कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है उसकी एक तो वो रिपोर्टिंग है जो हम वेस्टर्न मीडिया में देखते हैं, या पाकिस्तान में जो मीडिया है वो उसकी जो रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गए हुए भी हैं, कुछ ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, लेकिन सूरत हाल ऐसे लगता है कि तेजी से खराब हो रही है। अभी कल जो है वो बॉम्बिंग्स हुई और उसके नतीजे में 60 से ज्यादा जो है कैजुअल्टीज हुई। अभी जो है वो सिलसिला जारी है अफगानिस्तान से बाहर लोगों के निकलने का। रेफ्यूजीज मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, फ्लाइट्स का मसला है काबुल एयरपोर्ट पर। तो आपको जब आप अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो किस तरह की स्टोरीज आपको सुनने में आ रही हैं? वो मैं तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ बात कर रहा हूँ एवरी डे, और वो सब यही कहते हैं कि वो अफगानिस्तान में खौफ है। एवरीबॉडी, सिक्योरिटी नहीं है, उनकी नज़रों में फ्यूचर नहीं है। एंड रियलिटी है कि अफगानिस्तान में फ्यूचर नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स अफगानिस्तान में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में नहीं है, और पीपल का तजुर्बा भी यही है कि वो उन्होंने तालिबान के दौरान में 20 years ago what happened, और उन्होंने क्या तजुर्बा किया। सो वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। so, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से बाहर निकले। now it is a chance for them, एक चांस है तो कि यूरोप और अमेरिका जाए। तो जब हमने सुना था, जब ये टेक ओवर हुआ तालिबान का, काबुल फॉल हुआ, तो तालिबान ने अनाउंस किया था एक एमनेस्टी कि सबको आम माफी मिलेगी और हम किसी को काम करने से नहीं रोकेंगे और किसी को टारगेट नहीं करेंगे। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा हुआ या ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट थी? ये सब पेपर में है, ग्राउंड में कंडीशंस डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। मैंने एक फ्रेंड से बात की दिस मॉर्निंग। उसने मुझे बताया, वो माय फ्रेंड सेंड मी अ वीडियो टू, वो मुझे एक वीडियो भेज दिया, और उन वीडियो में ही हैज रिकॉर्डिंग किया। तालिबान ने targeted search of the houses of people, those अशखास जो foreigners के साथ काम किया है, previous government में थे, और वो high ranked क्या वो official state targeted search is happening। और उन्होंने एक blacklist भी also prepare किया है। they are looking for other people। जो आदमी एयरपोर्ट जाता है और उस शख्स ने फॉरेनर्स के साथ काम किया है, उसका नाम लिस्ट में है, और वो लिस्ट तालिबान के साथ पे है। So when they go to the airport, the Taliban check the name. If the name is found on the list, those people are taken aside. So the amnesty is on the paper, it's just a paper में, but in actuality Taliban are still searching people that were working for the government or with the government or with foreigners.
तो ये जो हमें खबरें मिलती हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त अनरेस्ट है या जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये मोस्टली क्रिमिनल्स कर रहे हैं जिनका ताल्लुक तालिबान से नहीं है। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है जो आपके जानने वाले आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं? Well, criminal activities to reduce why? हम्म, Because Taliban do not show mercy when there is criminal activities. हम्म, वो punish करते हैं on the spot. But power जो है वो तालिबान के हाथ में है. हम्म, So if there is something happening, हम्म, अगर आप if you are saying that the target searching is a criminal activity, हम्म, well, this is the Taliban. ये Taliban है. हम्म, If you mean stealing, robbing, shooting, fighting, battering, will reduce why a lot. ठीक। Um, जी जी। तो मुझे ये बताएं कि जब ये टेक ओवर से पहले की जो सिचुएशन थी, जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और 20 साल जो है ये वॉर ऑन टेरर लड़ी जाती रही अफगानिस्तान में, उस वक्त लोगों का सेंटिमेंट क्या था? क्योंकि उस वक्त भी जो पीस था वो पूरी तरह तो रिस्टोर नहीं हुआ था, लेकिन क्या लोगों को ये उम्मीद थी कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है और कोई फ्यूचर जो है वो हमारा बेहतर हो सकता है? हाँ, Taliban takeover से पहले people optimistic थे हम्म, और progress were made. पेशरफ्त तरक्की हुआ था 20 साल में. Women's rights, हुकूक वो guarantee था or guarantee थे for women. Women could go to work. They had rights. They had voices. Now, Khawateen, women, they know that such thing will not exist under the Taliban regime. Or it is the same for men. Because they have experienced living under the Taliban regime 20 years ago. So Taliban they're just implementing their interpretation of Islam in Afghanistan that goes back centuries, while the rest of the world is living with today's, life conditions. ये चेंज की वो बात है जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं। हमें बार बार ये कहा जाता है कि तालिबान जो है वो चेंज हो गए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये कहती है कि अब उन्होंने कुछ सबक सीख लिए हैं, एंड दे विल बी रिफॉर्म्ड एंड दे विल बी डिफरेंट। तो जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनका एक्सपीरियंस तालिबान के साथ कैसा रहा है? उनको लगता है कि कोई तब्दीली आई है उनमें? People optimistic नहीं है. It is a बहुत difficult situation है अफगानिस्तान में. First, there is lots of खौफ है, तरस है, और people are also Taliban are also in a बुहरानी situation में है. एक तरफ अल-कायदा है, उसका ताल्लुकात अल-कायदा से, दूसरी तरफ now they have overtaken the country. They are not a terroristic group. A terroristic group नहीं है उनके नजरों में. Also, they want to switch from terroristic group to be a ruler, a state, एक हुकूमत हो. So for that to change from being a terroristic group to a government and rule and make people optimistic that there's going to be a future, people, but this will take a lot of time, and Taliban will need a lot of trust building with people to convince people that they are going to be safe. So far, people do not trust them. तो क्या ये जो सिचुएशन है जिसमें ये सुनने में आता है कि रेजिस्टेंस ऑन ग्राउंड तालिबान को कोई नहीं मिली जहां जहां उन्होंने कैप्चर किया, उसकी वजह वो फियर है जो लोगों में है, या लोग जेन्युइनली उनको पसंद करते हैं? Fear.
ये सब फियर है, मेनली ये फियर है। जब उन्होंने ये ऑफेंसिव शुरू की, in the beginning there was resistance, war resistance थी और fighting थी. जब what Taliban did, what Taliban किया वो ये था कि fight, if you capture, destroy, kill, and capture, and burn. So it spread fear. And then they also, Taliban also, the governance के साथ बात की, उनको bribe दी, money, or and said, tell the forces to surrender. You'll be safe. ठीक. Or we'll kill all of you if we capture. So it spread fear. जब districts and provinces and cities collapsed, one after another one, the rest of the cities, बाकी शहरों में forces जो थे, they thought, they said, well, it doesn't make sense to fight when there is no backup. So they just surrendered. तस्लीम हुई, forces तस्लीम हुई, one after another one. अच्छा, अब जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक निकल सके हैं? अमेरिका भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान भी जा रहे हैं, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में भी जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो अभी तक निकल सके हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं? किस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं उनके? So yes, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अमेरिका पहुंचे, कुछ फ्रेंड्स यूरोप पहुंचे, कुछ फ्रेंड्स और फैमिली वो अभी अफगानिस्तान में है। एक फ्रेंड मैसेज की आज कल दिस मॉर्निंग, और उन्हें कंफर्म की कि वो यूरोप में है, वो यूरोप पहुंचा, और उनके सेंटिमेंट, दे आर ऑप्टिमिस्टिक नाउ, वो खुश है जो because they're not in Afghanistan under the Taliban regime anymore. But they also tell stories that are horrifying. Living in Taliban, they tell stories that it's like a ghost city. Kabul is like a ghost city. Or stories about airport hai, or like a friend described it like World War II concentration camps, World War II, and people are trying to get out. Tens of thousands of people have poured into the airport trying to get out. So this is the sentiment. ये sentiment है. ठीक, तो मैं आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। आप खुद ये जब ये 20 साल जैसे मैंने कहा ये जंग चलती रही अफगानिस्तान में, इस दौरान में आपको खुद भी बाहर निकलने का मौका मिला, आपने एक नई जिंदगी बनाई अपने लिए। तो अब जब आपकी तरह के लोग दोबारा मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बताएं कि कितना मुश्किल है सारा कुछ पीछे छोड़ के एक नई जगह जाके एक नई जिंदगी दोबारा से शुरू करना, और क्या उसके बाद आप कट ऑफ रह सकते हैं पीछे से? ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। When you refugee, आप जब when refugee बनते हैं, तो आप like you leave everything behind. सब कुछ you leave behind and you start from scratch. But what's up? It's part of you. It's your part of you, your life, your culture, everything you leave it behind. So you start from scratch. You start in a different culture, a different lifestyle, different infrastructure. The first generation of refugees, when they go to Europe, the first generation Europe jate or America jate, yes, they go under crisis, or they go through a crisis, identity crisis, a cultural crisis, because it's completely different. You have to learn everything from scratch in terms of culture. So
this has happened to me too. I feel that half of me is in Afghanistan and half of me is here. When I'm here, I feel connected to Afghanistan. When I go to Afghanistan, I find myself somewhere where it's not the same anymore. It's not the same Afghanistan I was used to. So I feel like I don't belong here, I don't belong there. बिल्कुल, ये जो being in a no man's land टाइप की कैफियत है, ये बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी तकलीफदेह होती है। तो इस दौरान में आपने फिल्में भी बनाई अफगानिस्तान में, आपने कोशिश की कि इस तरह का क्रिएटिव वर्क जो है वो किया जाए, जो अफगानिस्तान में तालिबान के पहले दौर में अलाउड नहीं था। आपने एक तरह से ब्रिजेस बिल्ड करने की कोशिश की यहाँ पे रहते हुए अफगानिस्तान के साथ। तो अब आपको लगता है कि आप इस तरह, आप या आपकी तरह के दूसरे लोग जो इस तरह के क्रिएटिव काम कर रहे थे, वो कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। अंडर तालिबान regime ये बहुत मुश्किल है। Arts to go back to Afghanistan, अफगानिस्तान वापस जाना, वहाँ फिल्में बनाना बहुत मुश्किल है ना। That is something that future will tell. That will depend to the Taliban's policies. But may I use arts to express how I feel about cultural, historical, and political elements of my own country and people around me. तो अफगानिस्तान जाना, वापस जाना, वहाँ काम करना under the Taliban regime is extremely difficult. Which means as an artist, I need to have that freedom of expression. I need to make movies that tell stories, becomes voice for people, not voice for a regime or a state. Right. And it will be difficult under the Taliban regime. Right. तो सिचुएशन तो जैसे आपने बताया खासी ग्रिम है और बज़ाहिर कोई ऐसा ऑप्टिमिज्म भी नहीं है जिससे ये लगे कि यह सिचुएशन कोई जल्दी बेहतर हो सकती है। इसको हम भी देखते रहेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जानने वालों के जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो फियर्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।